Hey everyone, welcome back Underdog Invitational League में आपका स्वागत है. It is brought to you by none other than Elite Four. काफी टाइम के बाद हम वापस लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट को. Yes, बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया था because quite a few things, a lot of things honestly जो कि हमारे सामने आ रही थी and और भी कई ऐसी चीजें जो हमारे सामने आएगी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको आज की स्ट्रीम में मिलती रहेगी. There's a lot of e-sports news that you would definitely want to know. तो अगर आपको वो चीज जाननी है तो फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो और इन द मेन टाइम सब्सक्राइब पे भी क्लिक करो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो बिकॉज आप नहीं चाहोगे कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस आउट करना बिकॉज देयर इज लिटरली अ लॉट ऑफ इट. फिलहाल हम चलेंगे मैच नंबर 1 के अंदर. दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन टीम मर्क्यूरी 5 जो होगी पर्पल साइड पे, दिल बी टेकिंग ऑन टीम होप जो कि रहने वाली है ऑरेंज साइड पे. एंड देखेंगे पहले दो बैंड. It's going to be the Blissey, साथ ही साथ टायरानटार और शीफू जो कि हमें पता है ब्रोकन चल रहा है इस टाइम पे. इट इज ओपन एंड डार्क उसे डायरेक्टली लॉक भी कर लेंगे. सो डिसेंट ड्राफ्टिंग कमिंग इन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स फॉर नाउ. देखना है और शीफू को भी कैसे काउंटर करने वाले हैं बिकॉज ऑफ कोर्स और शीफू यस ऑनेस्टली रियली अमेजिंग पोकेमॉन बट साइड बाय साइड कहीं ना कहीं ऐसा सीन भी रहता है कि थोड़ा सा स्क्विशी भी हो जाता है वो. तो अगर एक गलत पोजिशनिंग हुई तो पिक ऑफ करना कंपैरेटिवली इजी रहता है. सो पोजिशनिंग इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग इट शीफू. तो उसको काउंटर करने के लिए ट्रेविनेंट साथ ही साथ कॉम्फी दोनों को पिक कर लिया गया है. एंड द नेक्स्ट काउंटर पिक माइट बी ज़ूमरी अलोंग विद चारिज़ार्ड. नहीं, वीनसॉर को लॉक इन करा इस टाइम पे. सो डिसेंट ड्राफ्टिंग गोइंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ मर्क्यूरी 5. ऑलराउंडर्स अटैकर्स के साथ वो जा रहे हैं फिलहाल इस पॉइंट पे. सो आई थिंक सो कॉम्फी और ट्रेविनेंट का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी so very problematic to deal with for Mercury 5. But again, they've got the Mew, AG slash Hoopa, Blastoise. Frontlining is absolutely amazing for them. उनके पास कोई backline diver नहीं है, but again, they've got a very solid front line. So AG slash का wide guard अगर proper time पे use किया, then you'll be able to bait out a lot of skills from your opponents. So you bot tank हो जाते हो, and then you can just switch to the damage part and you can finish them off. You can wrap them up once the skills are on cooldown. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस होंगे जो शायद हमें देखने को जरूर मिलेंगे. तो देखना है how things are going to turn out in game. Best of 1 का गेम रहने वाला है. Yes, of course, it's going to be very, very important for all of these players, for both of these teams. We are going to jump into the Sky Ruins in just a few more seconds, and in the meantime आपके लिए एक टीजर न्यूज में जरूर बता दूं. नॉट विन गेमिंग एक बहुत बड़ा कप लेकर आने वाला है हमारे लिए, एंड दैट इज टू सेलिब्रेट द 100-day कप्स जो कि कंटिन्यूसली होते थे हमारे सामने. तो उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको इस मैच के बाद जरूर मिल जाएगी. तो मेक श्योर कि आप इस मैच के बाद स्ट्रीम पे स्टिक करो सो दैट यू गेट टू नो व्हाट दैट इंफॉर्मेशन इज. हमें पता है कि लास्ट अंडरडॉग पी विनर्स के रनर अप थे टीम क्लच. तो अभी देखते हैं इस बारी क्या रहने वाला है. फिलहाल मर्क्यूरी 5 एंड टीम होप यही दोनों are going to go up against each other. The winner stays in and the one that is not able to win will have to leave. Knockout match. Sky Ruins. We're going to jump into the stadium. Let's see which team gets the win. अगर सिर्फ ड्राफ्ट की तरफ नजर डाले तो कहीं ना कहीं I personally like AG Slash. But again, क्योंकि Trevenant और Comfy का combination we know is super solid, and साथ ही साथ there's a Venusaur in the side of Team Hope. तो कहीं ना कहीं जब मिड टू लेट गेम आएगा तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है टू टीम मर्क्यूरी 5. तो आई वुड से अगर ये गेम लेट गेम की तरफ जाता है और इजी फार्म अप कर पाते हैं टीम होप के मेंबर्स तो दे विल बी एबल टू गेट ऑन टॉप इन दिस स्पेसिफिक मैच. बट वहीं अर्ली गेम टू मिड गेम का जब ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम पे अगर फार्म लीड रही मर्क्यूरी 5 के पास, दे विल बी द वंस हु विल बी एबल टू कंट्रोल द पेस ऑफ द गेम एंटायरली. फिलहाल दोनों ही टीम्स दे जस्ट ट्राइंग टू गो इन फॉर देयर स्कोर्स. वीनसॉर जंगल में गए हैं. ग्लेशियन जंगल नहीं है. ग्लेशियन इज प्लेइंग इन द बॉटम साइड अप अगेंस्ट द म्यू. फिलहाल एजी स्लैश ही वांट्स टू पिक डार्क ऑफ. एचपी बहुत ज्यादा लो. वीनसॉर की भी इसकी रोटेशन सीधा टॉप साइड की तरफ एंड उन्होंने पिक ऑफ भी कर लिया है. That's a very good pick off that too in the early game. एक एडवांटेज उनको मिल जाएगी इससे. Glacian was just able to get that last touch onto the
Jungle creep very quickly. फिलहाल हुपा आराम से म्यू के साथ खेलेंगे. They'll be the ones who will be supporting and technically I'm still surprised that Trevenant और Comfy दोनों एक लेन में नहीं खेल रहे. They're not playing together, but वहीं Azumarill अभी टॉप साइड में और शिफू से पिक ऑफ होते हैं उनको नजर आए हैं. तो that is little problematic. कहीं ना कहीं एक पिक ऑफ जरूर निकल जाएगा Venusaur का. The junglers, both of them are actually rotating in towards that top side. So दोनों ही टीम्स की प्रायोरिटी टॉप साइड पे चलती हुई. एंड फिलहाल कॉम्फी इज सपोर्टिंग Venusaur और शिफू की एचपी थोड़ी सी लो. विल बी रिट्रीटिंग बैक to the safety. And in the meantime, बाकी सारे पोकेमॉन्स अपने स्टैकअप्स पूरे करेंगे. Comfy now supporting Azumarill again. उसको देख के squad directly retreated. That was honestly a good decision for now. 67-9 the score difference. It is favoring team Mercury 5. तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग की तरफ उनका थोड़ा ध्यान जरूर है. एंड साथ ही साथ Edu being able to pick Glaceon off, but Trevenant वुडन हैमर से अच्छा सपोर्ट करते हुए एजी स्लैश यहाँ पे आ चुके हैं सीधा पिक ऑफ करने के लिए. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव आउटप्ले. बट Venusaur का रोटेशन was unexpected and Mew has this use eject button to run away and create that gap. Solar beam connect जरूर होगी. Trevenant की HP लो है. Hoopa has used the portal and side by side Trevenant भी पिक ऑफ हो जाएंगे क्योंकि Squirtle का रोटेशन आया है. That was absolutely perfect and on point. And Venusaur will just have to quickly retreat. लेकिन नहीं, Glaceon का सपोर्ट आया. Squirtle had overstayed his welcome. Pick off भी होते हुए नजर आए. And that is the fight being won by the side of Team Hope. That was a very good play from their side. And थोड़ी सी extended fight जरूर थी. But again, we have to see how things are going to turn out in those 5v5 fights. फिलहाल Venusaur की HP low will be taken down, but Vedu भी सीधा shut down हो जाते हैं. Trevenant playing amazing. And कहीं ना कहीं उन्हें रोकने में दिक्कत जरूर आएगी. There we go. Blastoise jumping in between 4 people. Mew ने pick off secure किया Trevenant के ऊपर, but the main core damage dealers are still surviving. Aegis Slash और Azumarill are going to go up against each other one-on-one in the top side. वहाँ पे I would say अगर Aegis Slash is able to outplay Azumarill then he will get a very good advantage. But Mew ने भी rotate कर लिया है वहाँ पे. And in the meantime, the bottom of the objective is being secured by the boat. Right now it's going to be Team Hope will be securing it. उन्होंने ही शुरू किया था. Blastoise का engage जरूर आया था. And for now he is actually trying to pick them off. But Venusaur 2 KO के साथ और शिफू को भी pick off करते हुए. And that is going to be Hoopa unleashed. He will still jump in with that fighting spirit. अभी देखना है क्या वो survive कर पाएंगे. His HP is so very low. He still wants to go in for the fight. क्योंकि उसकी टीम को support है. That is absolutely perfect. As Blastoise gets 2 KO streak and wants to go in for a 40 score. Trevenant वहीं पे रोकते हुए. There we go. The Unite has been used. अब Hoopa ने अपना portal भी लगा दिया था. Blastoise will increase his HP, will jump back into the fights and वापस से उतनी ही low HP हो जाएगी. Glaceon wants to go in, pick him up, but still he's pretty tanky. Here we go with the rapid spins again, but the damage from Glaceon बहुत ज़्यादा, much more than he can tank for. But it is still a very low scoring match. कहीं ना कहीं 97-25 score difference था ज़्यादा नहीं. But top side क्या Azumarill pick off होंगे. फिलहाल he's the one surviving actually and the things have turned around. Team Hope top side में एक और बार 2 KO के साथ Venusaur shows in for the perfect support. And Azumarill Reggie Lecky की तरफ अब focus डालते हुए and they'll actually be able to secure the Reggie Lecky in the top side. 97-25 and there we go. Comfy and Venusaur का combination कहीं ना कहीं अच्छा चलता हुआ and they will be able to win those fights. Blastoise और Aegis Slash दोनों को pick off कर लिया है and they've actually managed to take the tier 1 down. Hoopa also gets taken out. That was the 2 KO for Glaceon. And Azumarill finally will be picked off और शिफू का अच्छा डैमेज आता हो. There we go with the full combo of his Unite move. But कहीं ना कहीं Venusaur survive कर रहे हैं. We pick off हो जाएंगे और Comfy अब अकेले नहीं बच सकती. In a very awkward position, mobility उतनी ज़्यादा नहीं थी and Blastoise is doing a great job. Glaceon को सीधा पे रखने के लिए, but Glaceon is also trying to stop the scoring और शिफू finally वो 50 का स्कोर करेंगे.
and now they will actually want to go in for the chase. Pilal, Eminent की HP काफी ज़्यादा low. Will try and get that HP back. AG slash will be jumping in the fight again, and Mew is the करेंगे Trevi को. Lazy slash just went in way too deep. Fight guard नहीं था, pick off हो गए, and Venus और का अच्छे support था तो देखो Giga Drain. Just one more level and Petal Dark का next upgrade भी उनके पास आ जाएगा. So if they are able to secure this Regirock, वो एक EXP advantage इनको जरूर मिल जाएगी, and that is going to be the go sign for the side of Team Hope, क्योंकि अब वो फाइट में वापस जंप इन करेंगे, बट फिलहाल वीनस और कुछ ज्यादा ही डैमेज आगे होता है, कर नहीं पाते. एक स्लैश है बहुत बेहतरीन यूनाइट को इस्तेमाल किया, बट स्टिल Ezreal is the one जिन्होंने उन्हें pick off कर लिया. That was an absolutely insane retreat back, but that unite from each side जो कि almost दो लोगों पे connect हुई थी, that was really good. It could have turned things around. अगर एक full fledged 5v5 fight होती है तो उसमें I personally think that maybe at this specific point, looking at the situation wherein Venus और अब level 13 hit कर चुके हैं, तो Team Hope will actually have the advantage. These are the ones who are actually winning in those fights. And फिलहाल टॉप साइड में रेजी लेकी की तरफ एंगेज चलता हुआ जरूर हमें देखने को मिल रहा है. will he be able to secure that? नहीं, Venus is the one who actually secures the Reggie Lecky, and यहाँ पे फाइट भी कंटिन्यू चल रही है. There we go, Unite Shifu का यूज हो गया था, but it's been finished off in the midst of his Unite. Mew ने अपने Unite इस्तेमाल किया, will retreat back to safety as well, and that is an amazing play from the side of Team Hope. 3 लोगों की Unite वहाँ पे यूज करवा चुके हैं वो, and 3 of their teammates have their own Unite move. 2 सेकंड में फाइनल स्ट्रेच. वीनस और क्या वो स्कोरिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाए. That was a very good defense from the side of Team Mercury 5, and अभी भी लीड में वो 237 to 125. So team fight, yes, of course, it is going in favor of Team Hope. But Team Mercury 5 are the ones जो कि स्कोरिंग में आ गया. फिलहाल ऊपर एटलीस्ट यूज द ग्लेशियर has been picked off. Venus और अभी फुल HP में will jump in with the Giga Petal combination. वापस आ चुका है, and there we go, easy flash though, taking out Azumar in the process, and fights are still going and not in anyone's favor. 2v2 for 2 का ट्रेड ऑफ यहाँ पे आता हुआ, but Mew long range फाइट करते हैं. Finally Venusaur is the one who shuts everyone down. 3 KO की स्ट्रीक निकाल के he'll just directly focus on the Rayquaza. Comfy के सपोर्ट के साथ, that is the thing, that is the problem that comes up. Trevenant भी आ चुके हैं वहाँ पे, but बहुत ज़्यादा लो HP. There we go, rapid spin. Wooden Hammer का अच्छा इस्तेमाल, but देखना है who will secure. It is going to be Team Mercury 5. Rayquaza steal के साथ they've basically put the final nail in the coffin. ललित जाएंगे सीधा 47 का स्कोर इन करने. 37 स्कोर Mew के हाथ में भी है, who will just directly jump into the base. 331 to 125. और Shifu भी 3 KO की स्ट्रीक निकालते हुए मिड फाइट के अंदर probably 4 भी ले लेंगे, क्योंकि कॉम्फी है, भाग नहीं पाएगी. और Shifu has absolutely insane damage. Captain still trying to survive, and Shifu नहीं जिंदा बचने देंगे उनको भी. That is an amazing play. Mercury 5 सारी फाइट हार रही थी, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं ले पा रहे थे, और उसके बावजूद they held on and absolutely perfect play. Glaceon को pick off करके Ezreal को take down किया. They knew Trevenant को focus on करके कोई फायदा नहीं है. They managed to take the damage dealers out of the picture. That's gonna be final 2 pickoffs और Shifu के favor में, and they will be getting the win. 621 to 125. तो जो स्कोर इन ऑलमोस्ट बराबर चल रही थी वो पूरी तरह पलटती हुई, and Dark with that MVP rating of 86, 192 का टोटल स्कोर उन्होंने किया था. 5 pickoffs, 7 assists. ज्यादा पिकऑफ्स उन्होंने नहीं किए, बट द वे ही वाज प्लेइंग, जिस तरीके से वो जोन आउट कर रहे थे ग्लेशियन को, एज्यूमरल को, दैट वाज सो वेरी ऑन पॉइंट. एंड यही आप चाहोगे अपने ब्लास्टॉइज से देखना. यू डोंट वांट टू डील दैट डैमेज, यू जस्ट वांट कि आप अपने ओपोनेंट को एक इनफ टाइम के लिए जोन आउट कर दो ताकि उनकी फ्रंट लाइन को आपके मेन डैमेज डीलर्स पहले पिक ऑफ कर ले. दैट वाज जस्ट इनसेन प्ले. और शीफू 15 फिनिशेस, Venusaur 14 finishes, 9 assists. That is full on hyper carry gameplay from both the teams. But at the end of the day, it's Mercury 5 जो कि आगे बढ़ने वाले हैं इस मैच के अंदर.
वेल प्लेड टू टीम होप, बट कहीं ना कहीं रिक्वाजा स्टील के बाद द कमबैक वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट जी जी easy gameplay to both of these teams. It was actually a very entertaining match and a very fun match to watch. नाउ जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस मैच के बाद आपको एक न्यूज जरूर बताएंगे हम, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्डविन डेली पोकेमॉन यूनाइट कम्युनिटी कप 100 डे सेलिब्रेशन, जिसमें 16 इनवाइटेड टीम्स होंगी, एंड वो 16 टीम्स वो होने वाली है जो कि अभी तक जितने 99 डे कप्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जीती है. द टॉप 16 टीम्स वन द मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उन टीम्स को इनवाइट किया जाएगा फॉर द नॉर्डविन डेली पीयू कप, पीयू कम्युनिटी कप 100 डेज सेलिब्रेशन के अंदर. एंड द प्राइज पूल इज गोइंग टू बी मैसिव. जितने भी आपने नॉर्मली प्राइस पूल देखे उनसे बहुत ज्यादा का प्राइस पूल होने वाला है. द एग्जैक्ट अमाउंट वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको पता चलेगा बाद में. एंड कौन सी टीम्स जो इनवाइट होने वाली हैं, बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स, उनका पता हमें चलेगा इस वीक के नॉर्डविन कम्युनिटी कप में, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना. तो अगर आपको देखना है कि क्या आपकी टीम इनवाइट हुई है, क्या आपकी टीम सिलेक्टेड है, तो इस वीक का नॉर्डविन कम्युनिटी कप जरूर देखना, एंड उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द 100 डेज सेलिब्रेशन. तो ये चीज आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड नो मैटर व्हाट you would definitely want to join into those streams. तो इसीलिए फटाफट स्ट्रीम पे लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि इस टाइप की न्यूज आप बिल्कुल भी मिस ना करो. There are still a few things जो कि मुझे आपको बतानी है, बट फिलहाल हम चलेंगे ड्राफ्ट के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे टीम होप रहने वाली है पर्पल साइड पे, एंड इट्स गोइंग टू बी टीम मर्क्यूरी 5 ऑन दी ऑरेंज साइड. फैंस की तरफ फटाफट नजर डाले. शीफू साथ ही साथ क्लिफेबल को बैन आउट किया है. टीटार इस बार ओपन है, एंड टीटार को ही सबसे पहले दिखाया जा रहा है टीम होप की साइड से. सो इट इज पॉसिबल कि वो टीटार को लॉक भी कर ले. वी सीन के दे डू प्रायोरिटाइज द पोकेमॉन जो कि थोड़ा लेट ऑनलाइन आते हैं, बट जो पावर बफ उनको फिर मिलता है ऑनलाइन आने के बाद, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन. Venusaur, Tyranitar, and again those are the picks that are coming in from their side. but कहीं ना कहीं जो ट्रेवेनेंट पिछली बार उन्होंने लॉक किया था वो इस बार डिनाई कर चुकी है टीम मर्क्यूरी 5. they picked the ट्रेवेनेंट for themselves. साथ ही साथ एजी स्लैश को भी उन्होंने लॉक कर लिया. they're going to keep that pick, they're going to retain that. कॉम्फी वापस से सिक्योर करते हुई टीम होप, साथ ही साथ probably they're going to lock in the Azure, but नहीं, स्लो ब्रो के साथ इस बार जाना चाहेंगे. they want to go in for that complete lockdown. एक पोकेमॉन को वो सीधा स्टॉप करे, पिक ऑफ करे, एंड देन दे मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन. आंसर बैक विद डेल्फॉक्स. काफी अच्छा पिक रहने वाला है इस सिचुएशन के अंदर. साथ ही साथ म्यू को भी लॉक कर लिया है. सो दे गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ पोक. मर्क्यूरी 5 वांट्स टू मेंटेन द डिस्टेंस इन दिस स्पेसिफिक मैचअप. थोड़ा आराम से डिस्टेंस में रह के खेलेंगे, एंड आई बिलीव दैट इज अ वेरी गुड काउंटर टू अ पिक लाइक स्लोब्रो, क्योंकि आपको पता है स्लोब्रो आपको सब गैप क्लोज करने की कोशिश जरूर करेगा, एंड आप कहीं ना कहीं उसी डिस्टेंस को मेंटेन करके उसे पोक डाउन भी कर सकते हो और फिनिश ऑफ भी कर सकते हो. एंड टीटार इज ऑल्सो अ पोकेमॉन जो कि गैप क्लोजिंग करना चाहता है. दैट बेसिकली वुड वांट टू प्ले एट अ मीली रेंज, बट अगर वो रीच आउट नहीं कर पाया तो डेल्फॉक्स एंड म्यू, तो फिर पोक डाउन भी हो जाएगा, दिक्कत भी आ सकती है उसमें. सो प्रीटी गुड पिक, बट कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए वी आर सीइंग द एस्पियन एंड लुकारियो, जिनको शायद थोड़ी सी दिक्कत और आ जाए. अनदर गार्डिवोर पिक. I would say कहीं ना कहीं तीन ऑलराउंडर अप अगेंस्ट 3 लॉन्ग रेंज अटैकर्स. दिक्कत आ सकती है टीम होप को इस मैच के अंदर, जस्ट बेस्ड ऑन द ग्राउंड. बट आई वुड से कहीं ना कहीं एक स्क्विशी बैकलाइन भी हो चुकी है बहुत ज्यादा टीम मर्क्यूरी 5 की. 3 स्क्विशी हीरोज. तो देखना है कि पुल ऑफ कैसे करते हैं वो इस मैच के अंदर अपने फुल कॉम्बिनेशन को. ट्रेवेनेंट, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड फ्रंट लाइनिंग. एजी स्लैश अगर वाइट गार्ड वाले फॉर्म में है देन ऑफ कोर्स ही विल बी एबल टू टैंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज, बट कहीं ना कहीं शायद पूरा डैमेज टैंक ना कर पाए, स्पेशली व्हेन टीटार कम्स ऑनलाइन. तो दिक्कत उनको जरूर आ सकती है, बट विल हैव टू वेट एंड विल हैव टू सी हाउ थिंग्स आर गोना टर्न आउट इन दिस स्पेसिफिक मैच. जस्ट बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट, आई पर्सनली थिंक अगर अर्ली गेम में एडवांटेज ले ली तो मर्क्यूरी 5 वुड हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी इन दिस गेम. एंड अगर मिड टू लेट गेम की भी बात कर रहे हैं तो सिंस दे गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ होप, तो
आई वुड से दे माइट बी एबल टू गेट द एडवांटेज अगर वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके खेलते हैं इस गेम के अंदर. दैट विल I would just want to ask from you all, आपको क्या लगता है which team actually has the upper hand in this game? Is it Team Hope जो कि जा रही है Slowbro, Titar, SP on Comfy और Lucario के साथ, और will it be Team Mercury 5 with AG Slash, Delphox, Mew, Gardevoir and Trevenant? बस देखना जंगल पे कौन जाएगा. Will it be Delphox or will it be Gardevoir? I think so. शायद स्टार्टिंग में Delphox को जंगल भेज दे and जैसे वो पावर स्पाइक हिट करे then they switch back to Gardevoir, but we'll have to wait for that to happen क्योंकि हम आ चुके थे स्काई रूइंस के अंदर गाइस, और देखना है कौन सी टीम इस गेम में एक विन निकाल के लेके जाएगी. Mercury 5 के पास एडवांटेज है, they're up by 1-0 and Team Hope उनको ये मैच जीतना ही जीतना है ताकि वो गेम नंबर 3 फोर्स करे. सो देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है इस गेम के अंदर. Gardevoir जा चुके हैं जंगल में and it is going to be Delphox playing into that top side. फिलहाल Dark taking a decent amount of damage. क्या survive कर पाएंगे? मुश्किल लग रहा है. Evolution भी नहीं मिला. HP on Slowbro उनको damage मार दो, but look at that HP regen. Man, that is insane. But कहीं ना कहीं Mew का भी अच्छा support आता हुआ forced the retreat from SP on and Slowbro. अब देखना है एजी स्लैश डेल्फॉक्स के साथ टॉप साइड में खेल रहे हैं तो कॉम्पिटिशन जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते उतना, बिकॉज एजी स्लैश यस ही इज अ प्रीटी डिसेंट अटैकर, बट अगर हम देख रहे हैं उनको सपोर्टिंग रोल के अंदर तो might not end up the way that they think, and एजी स्लैश पिक ऑफ भी हो तो लुकारियो सीधा फिनिश ऑफ करते हो उनको. टीटार का लेवल 5 हो चुका है, इसको दी एंशिएंट पावर, बट वेदू जैसे कि हमने बताया था he will try and maintain his distance from टीटार. There we go, another evolution. AG slash फिलहाल second evolution पे, and he actually wants to go for that fight, but again the distance was something that he could not close in right away. Mew and Trevenant in the bottom, they're playing very decent. To be honest, they've got the advantage in that specific lane. तो देखना है कि क्या रहने वाला है इस गेम का रिजल्ट, बिकॉज इट्स 32-43. इट इज वे टू क्लोज, बट स्कोरिंग के मामले में जैसे हमने पिछले गेम में देखा था Mercury 5 were the one who were actually in the lead in terms of that scoring. वही सेम चीज हमें अभी भी देखने को मिल रही है. It's just a 20 points lead, but again they do have the lead. And Gardevoir यहाँ पे पिक ऑफ होता है. Lucario playing so very aggressive, and यही आप करना चाहोगे जब आपके पास कॉम्पी है. Titar is taking his own jungle. Level 7 already hit कर चुके हैं वो 2 लेवल और, and it's just 7.5 minutes of game. अभी भी जो बचा हुआ है, it's 2.5 minutes game जो कि over हुआ है, but that's gonna be direct pick off Lucario, just going absolutely insane. जो comfort pick आया है, you're not stopping Comfy. Heal जरूर देती, but he will be taken down. Man, that wooden hammer वो डायरेक्ट मेरे थ्रोट पे लगा. But seriously, that was a very good play from the side of Mercury 5. Lucario का जो rampage था उसको stop करने में they were absolutely on point, and Gardevoir का भी level up हो चुका है इस point पे, and both the junglers they will be looking in for their level up. तो इसी चीज को लेके चलते हुए अभी फिलहाल हम सबकी रोटेशन देखेंगे. It's going to be towards the ridges in the bottom side, and Lucario फिर से एग्रेसिव खेलते हुए बोन रश के साथ आगे जाएंगे, बट Mew ने गैप मेंटेन करके रखा हुआ है. And that's going to be Regis taken down by the side of Team Hope. And there we go. Trevenant भी continuously support करते हुए अपने टीम मेंबर्स को. Mew ने पिक ऑफ कर लिया है. एजी स्लैश साथ ही साथ Slowbro को टेक डाउन करते हुए, बट बैक लाइन में क्योंकि कोई भी बचा नहीं रहा था Mew को. Lucario was easily able to just jump in with the help of Comfy. And Titar का भी evolution हो चुका है, तो आपकी शील्ड अब फायदा नहीं करेगी. That is going to be Titar taking AG slash down as well. Gardevoir आराम से गैप मेंटेन करके खेलते हैं, बट अगेन
Revenant सबके सामने will not be able to do anything. T-Tar का damage just directly going in through that shield. True damage सबसे ज्यादा दिक्कत वो ही देता है. And now they're not at all stopping in those rampages. T-Tar का कहीं ना कहीं level 9 होने से रोकना था, जिसको बिल्कुल भी नहीं रोका टीम मर्क्यूरी 5 ने. और अब टीम होप पूरे गेम को टर्न अराउंड कर चुके हैं. नाउ they basically flipped on their head. 150-200 का टोटल स्कोर डिफरेंस. ये सभी 5 पॉइंट्स की लीड, 85 पॉइंट्स की लीड जरूर है टीम मर्क्यूरी 5 के पास, बट उसके बावजूद they're not being able to control in those fights. But that is the thing, you know. पिछले गेम के अंदर भी they were not able to control the flow of the team fights, but उसके बावजूद they managed to score and they managed to outscore the members of Team Hope. कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम शायद इस गेम में भी दोबारा से आ सकती है. फिलहाल लुकारी और डेलफॉक्स को टेक डाउन भी कर लेंगे. एजी स्लैश सर्वाइव नहीं करने वाला उस बर्स्ट को. Revenant will try to save his backline, but backline को कैसे बचाओगे when you've been taken out of the picture? The burst again, T-Tar सीधा zone out करते हैं बाकी सारे members को. Will he finally be taken down? क्योंकि continuous damage इनके ऊपर आता हुआ. AG slash switches to the damage mode, but again T-Tar वापस HP अपनी बढ़ाते हुए. That is an insane play. Comfy का support is just so on point. Reggie Lakey has been stolen by Mercury 5 and numbers advantage से पूरी फाइट फ्लिप कर दिया उन्होंने. जो बर्स्ट की हमें उम्मीद थी वो अब निकल के एडल फॉक्स से with 3 finishes, 4 finishes to be honest, not just 3. Insane team play and इसकी और नहीं थे टॉप साइड में. हो सकता है वो होते तो हमें पहला 5 finishes दिख जाता. फिलहाल एजी स्लैश won't be able to tank it at all. पिक ऑफ हो चुके हैं but he's done his job. क्योंकि Mercury 5 के members are now again in the score with 316 to 193. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले गेम में, even though they were winning those team fights, जो important fights थी, the main objective fights, उसको जीतने में वो कामयाब जरूर हो गए थे. They were the ones who were able to stop the pursuit. Wide guard फिलहाल इस्तेमाल हो चुका है. T-Tar दोबारा से ancient power के साथ still just try and jump in on Gardevoir and Mew ने unite भी इस्तेमाल कर लिया है. They managed to retreat to the safety. और लुकारियो कोशिश जरूर कर रहे थे उनको पिक ऑफ करने की, बट फिलहाल ट्रेवेनेंट 3 लोगों के बीच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. गार्डिवर आए करने के लिए, पर लुकारियो ने ट्रेवेनेंट को इस समय पिक ऑफ भी कर दिया. एजी स्प्लैश वाइट गार्ड के साथ जरूर आए थे बीच में, बट वो सोलो, ही वाज जस्ट वन एंशिएंट पावर्स. यस, पिक ऑफ भी हो गए हो, बट अगेन वी कैन क्लियरली सी the thing that Team Hope is trying to accomplish with those fights and not being able to just turn it around into some other objectives. So fight जरूर जीत रहे हैं, but फिर और objectives को secure नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से उन्हें दिक्कत जरूर आ रही है. And Fox hitting level 13 as well, तो next upgrade भी आ जाएगा उनकी ability के. Now it's going to be even stronger. तो कहीं ना कहीं they have to quickly just clear in those gaps. but फिलहाल T-Tar on level 14, साथ ही साथ लुकारियो on level 14. so of course the things that they need, they have the tools to win the fight, but convert करना उस चीज को into major objectives is going to be the thing that they'll have to focus on after this specific team fight. T-Tar Comfy के support के साथ फिलहाल we'll just try to scout out the area for now, but again require उन्होंने कर दिया था ड्रोन. नो डार्क शैडो की बुश में है. there we go, डार्क कबर्ड एंड हैमर स्लो ब्रो सीधा बुल्स डाउन हो चुका है. नॉट बता दी बात बताइयो. बैकलाइन में जाते हुए अभी जी क्लास के सामने आएंगे. यूज द वाइट गार्ड एंड ट्रेवेनेंट was able to zone out Espion, लेकिन कॉन्फिडेंस को फिनिश कर रही है. what an amazing play. honestly that's gonna be Mew using the unite move as well, and T-Tar is still surviving. तो जो खुशीनेस की हम बात कर रहे थे वही हमें टीम फाइट्स में देखने को मिली, and that is going to be a big win for the side of Team Hope, जिन्होंने रिक्वाजा भी सिक्योर कर लिया. 193-316 का टोटल स्कोर डिफरेंस, जो कि अब बहुत ज्यादा कम होता जाएगा. There we go, T-Tar का 50 स्कोर
साथ ही साथ बॉटम साइड में भी स्कोरिंग रोक रहे हैं स्लो ब्रो एंड एसपीओन वर एबल टू टेक डाउन एजी स्लैश एंड एसपीओन वांट्स टू गो इन फॉर दैट स्कोर फाइनली अपना ऑन का स्कोर भी कर देंगे वो इट्स गोना गिव देम 100 पॉइंट्स टीटा सीधा बेस के अंदर ट्रेवेनेंट से वो फिलहाल 1v1 फाइट कर रहे थे गार्ड वर्क का भी सब हुआ द व्यूज यूनाइट येट अगेन but the damage has been done team हो 539 की स्कोर के साथ they are the ones who are leading and फिलहाल ट्रेवेनेंट वुडन हैमर एचपी जरूर बढ़ाएंगे अपनी this does not die but and we can see the same thing for T-Tar that too with the support of Comfy was able to take him down और Gardevoir भी survive नहीं करेंगे and T-Tar with 2 KO streak will it be a third one yes it definitely will it be a fourth वो नहीं देख पाए नो इट वॉज नॉट अ फोर्थ एजी स्लैश वॉज सर्वाइविंग एक बार की एचपी के साथ बट दैट इज एन इनसेन प्ले टीम होप फाइनली they were able to win the team fight and उसके बाद they were able to convert it into Rayquaza and then finally took down those bases insane play T-Tar with the MVP 87 की rating 8 finishes 12 assists Comfy with 3 finishes and 20 assists What is that? Zenmog ने पूरा early game संभाला अपनी टीम के लिए. He was the one who was controlling the entire early game, especially with those bone rushes and those continuous dive-ins and finishes. That was a very good play and a much coordinated, I would say much better coordinated gameplay from both of these teams, to be honest. But Team Hope, with 539 to 316, wins this specific game. But वहीं पे अब हमें बात भी करनी थी जो एक दो चीजें जो और जो न्यूज है आपको बताने की वन ऑफ दैट इज गोइंग टू बी द ग्लिट्स एंड ब्लिट्स का ग्रैंड फाइनल जो कि होने वाला है नेक्स्ट वीकेंड द कमिंग वीकेंड ऑनेस्टली वो होएगा उसका ग्रैंड फाइनल एंड यू डेफिनेटली नॉट वांट टू मिस इंस्टा पेज को अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि फाइनल्स में कौन सी टीम आ चुकी है सो You would definitely not want to miss that. So Glitz and Blitz का grand final next weekend है guys. Make sure to join in the Discord server. Link description के अंदर है. And like और subscribe पे भी click कर दो ताकि आप लोगों को पता रहे about all the upcoming updates and all the news that we're going to bring in forward for you. फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का and we'll be right back after that.
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आ चुके हैं थर्ड गेम के अंदर। यू आर वाचिंग द एलीट फोर प्रेजेंट्स अंडरडॉग इनविटेशनल लीग, जो कि आज तक पीयू में कभी भी नहीं हुई है। वो चीज हो रही है, अंडरडॉग टीम्स बीइंग इनवाइटेड फॉर द। तो फटाफट से देखते हैं कि अब गेम नंबर 3 के अंदर क्या होने वाला है। बिकॉज स्कोर इज 1-1। Mercury 5 have won one match and side by side Team Hope have also won one match. देखते हैं थर्ड गेम के अंदर how things are going to turn out. फिलहाल there's gonna be Lucario, जो कि वापस रिटेन किया है टीम होप ने. He's actually just easily stacking up side by side. Comfy का सपोर्ट भी उनके साथ है ही जरूर, so he will be able to survive through all of that burst जो कि उनके सामने आने वाला है. फिलहाल स्लो ब्रो विल बी द वन ऑन टुवर्ड्स दैट बॉटम साइड एंड देयर वी गो. ट्रेवेनेंट अगेन, जस्ट एज वी नो, दिस पिक हैज बीन रिटेन्ड अगेन. तीनों गेम्स के अंदर हमने ये पिक तो जरूर देखा है. इस बार हुपा को भी लेकर आ चुके हैं टीम होप के मेंबर्स. दे आर गोना प्ले विद दैट स्पेसिफिक लाइनअप साइड बाय साइड. Again, just as we know, Team Hope likes to play कि एक लेट गेम इंश्योरेंस जरूर रखते हैं. वो रहेगा इस बार वीनस और उनके लिए, जो कि जंगल में खेल रहे होंगे. एंड लुकारियो इज द वन who's gonna have the early game aggression control. फिलहाल डेल्फॉक्स कोशिश कर रहे थे पिक ऑफ करने की, बट नहीं कर पाए. दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग स्कोर ऑफ 22, जो कि उर्शीफ को करते हुए नजर आएंगे. एज उन्होंने लुकारियो को भी पिक ऑफ किया, साथ ही साथ कॉम्फी को. They actually managed to pick 3 people off. and अभी हुपा ने बहुत बढ़िया अपना हो लगाया था, उसको ट्रैवल करने में कामयाबी हो गए ट्रेवेनेंट. एंड ही वाज ट्राइंग टू स्कोर एंड पिक ऑफ भी कर लिया है, तो फायदा तो नहीं हो पाया. बट उसके बावजूद अर्शीफू वीनासौर के जंगल में जाकर उनको पिक ऑफ करने में कामयाब हो गए. कॉम्फी ने फटाफट से स्किल यूज करी है स्लो ब्रो के साथ अटैच, लेकिन वे बुश में आराम से वेट कर रहे हो. तो पता है वीनस और दोबारा आने वाला है. देयर वी गो, कॉम्फी सीधा बर्स्ट डाउन सेकंडों के अंदर. एंड वेदू बफ बिल्कुल नहीं लेने देंगे वीनस और को. द वाटर स्टाइल उर्शीफ इज जस्ट एब्सोल्युटली इनसेन. वीनस और फाइनली अपना बफ सिक्योर करने में हो तो कामयाब गए, क्योंकि स्लो ब्रो का सपोर्ट भी आया था. कॉम्फी भी वापस आ चुकी है. क्राफ्टन दोबारा से अटैच होंगे किसी न किसी पे. साथ ही साथ मिड बीज कॉन्टेस्ट तो हमने आज तक नहीं देखा. प्रोबेबली इट वाज टीम मर्क्यूरी 5 जिन्होंने वो सिक्योर करा. बट अगेन विल हैव टू सी हाउ थिंग्स आर गोना टर्न अराउंड. पेट्रोल डांस सीधा आ चुका है फिलहाल. Really focusing down on the bottom bees and the burst from their side. But साथ ही साथ Trevenant का healing is absolutely insane. There we go, knock up 3 men का. but उसके बावजूद Slowbro was able to pick him off. Espion and Venusaur ने भी बहुत अच्छा supportive damage जरूर दिया था. They actually managed to take only Trevenant down though. He made sure that his team survives in this situation. But their entire attention is towards that bottom side, क्योंकि Reggie Steel वहाँ पे आ चुका है. They will be trying to take it down. साथ ही साथ Urshifu यहाँ पे join in कर चुके हैं fight को, wants to go in for the contest. But Reggie Steel has been secured by Team Hope और fight भी उनकी तरफ जाती है. फिलहाल उर्शीफू की एचपी बहुत ज्यादा लो, was able to take Venusaur down, but स्लो ब्रो ने नहीं बच के जाने दिया उनको. कॉम्फी का सपोर्ट, this is absolutely amazing. Side by side Elfbox has also just rotated towards bottom side. But हमें पता है that, you know, looking at the composition again, Team Hope that they're going in with those all-rounders. So close in fights में तो they will be absolutely insane. But कहीं ना कहीं the point damage that is going to come out from Delphox and Mew, उससे दिक्कत जरूर उनको थोड़ी बहुत हो सकती है. देखने क्या सिचुएशन निकल के आने वाली है हमारे सामने फिलहाल. क्योंकि टॉप साइड पे both of the teams are rotating. And Reggie Lecky की तरफ the fight, if it breaks out, Delphox is not in that fight. शायद problem हो जाए, but that is going to be the Reggie Lecky easily secured by Team Hope. There we go. Burst उनकी तरफ से आता हुआ 2 pick-offs already निकाल चुके हैं. Want to go in for the third one as well. But Urshifu was able to retreat back to safety. फिलहाल they'll be trying to stop Reggie Lecky. Delphox survive नहीं कर पाएंगे burst को, and that is going to be Espion taking Urshifu down. Insane play coming in from the side of Team Hope. But again, the retaliation, they overstayed their welcome और did they, क्योंकि Venusaur सीधा चीजों को turn around करेंगे.
And साथ ही साथ Slowbro was able to shut Hoopa down, but Trevenant did survive in that fight. फटाफट से पोर्टल यूज करके बेस में गए, एचपी बढ़ाई और वापस फाइट के अंदर आ गए थे, बट ही वाज अ लिटिल टू लेट फॉर दैट. But again, कहीं ना कहीं continuous scoring देखिए तो it is still favoring the side of Mercury 5, 173 to 93. Hoopa Unleashed has been used up. There we go. Venusaur, they've got the berry. HP तो बढ़ जाएगी इनके साथ ही साथ. Slowbro will also get his HP back, but tier 1 has been taken down. Venusaur 2 pickoffs के साथ will finally be shut down. Delphox का damage, and there we go. Another the long range. Delphox has to retreat. Gold Rush Lucario चेज कर रहे हैं फिलहाल. He will actually reach Delphox और पिक ऑफ भी कर देंगे. Lucario को जो assassin स्टाइल में खेला जा रहा है, that is so very lovely to watch. मेऊ ने दो रेजिस को जरूर स्टील कर लिया अपने ओपोनेंट से, तो अपनी टीम को एक फार्म एडवांटेज जरूर दिलवाई है. He actually managed to survive that. Yes, he did. साथ ही साथ उर्शीफ को इस दौरान जिन्होंने Slowbro को भी पनिश कर दिया है. इसके उनकी एचपी लो जरूर है. They'll have to retreat back. Hoopa का भी सपोर्ट वहीं पे आता हुआ. That is going to be yet another fight being broken out. But Lucario आराम से सर्वाइव भी कर जाएंगे कंपनी के सपोर्ट के साथ. Now Reggie Lecky is going to be again the focus of the attention. Venusaur के साथ Comfy is attached, and they will be also making that rotation towards that side. But फिलहाल full 5 men ऑफ साइड में Lucario ने यूनाइट जरूर यूज कर ली, पर थोड़ी सी ज्यादा जल्दी. लेकिन Delphox को पिक ऑफ करने में रेजी लेकी को स्टील करने में परफेक्टली कामयाब Lucario. 2 पिक ऑफ भी निकाल चुके हैं, बट विल फाइनली बी शट डाउन. म्यू ने टेक डाउन कर लिया उन्हें, एंड नाउ Slowbro will not be able to survive the burst of Trevenant. साथ ही साथ और Shifu Venusaur Comfy के सपोर्ट के साथ will try to survive. He is level 13, तो एक अच्छा बफ भी उन्हें मिल गया पेटल डांस का. बट स्टिल look at the burst damage. Venusaur आराम से टेक डाउन करने में भी कामयाब हो गया. Now wants to chase Urshifu. Long range fight. Urshifu finally सपोर्ट आ गया म्यू का. जंप इन, लेकिन जो कि डैमेज कर दिया. Now he will be taken down. Venusaur surviving that entire burst. और Comfy वापस से उनके पास यूज करके एचपी वगैरह बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे. बट 182 to 113 का टोटल स्कोर डिफरेंस, it is still favoring the side of Mercury 5. तो Mercury 5 कहीं ना कहीं स्कोरिंग में तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है. Even though they're not being able to win those fights, scoring में they're definitely making sure to keep up. फिलहाल देखना है रिक्वाजा फाइट में क्या होने वाला है, बिकॉज द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ टीम होप. हमें पता है अगर उनके पोकेमॉन्स को लेवल अप करने दिया तो फिर दिक्कत जरूर आएगी टीम फाइट के अंदर. बट Trevenant बैकडोर करने में परफेक्टली कामयाब, was able to score in a score of 100. एंड अब Comfy ने Delphox को पिक ऑफ तो कर लिया है. फिलहाल Hoopa Unleashed, Trevenant एंड Hoopa बैक साइड से जाते हुए, बट Urshifu एंड साथ ही साथ Delphox दोनों ही पिक ऑफ हो चुके हैं. बाकी यूनाइट मूव भी हो चुके हैं. Trevenant 3 लोगों के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं, and he still is going. Espeon को टेक डाउन करने में कामयाब. What have I just witnessed? That was an insane play, but Hoopa अभी फटाफट से अपना टोटल यूज करके एचपी बढ़ा के वापस आ गए. Slowbro ने 100 स्कोर कर दिया है. फाइनली ब्रेकन डाउन द टियर 1, बट रिक्वाजा अभी भी नहीं लिया है किसी भी टीम ने. Lucario दो कर रहे हैं. He will be able to do that, but it's just 44 score. 282 to 257 is the total score for both of these teams. फिलहाल Hoopa easily take down हो जाएंगे. The burst of Venusaur and Espeon, absolutely insane. Lucario was able to take Mew down. Now an advantage is clearly in favor of Team Hope. But Trevenant wants to jump in, will be taken down. Was not able to tank in that damage. And finally Venusaur ने Delphox को भी take down कर दिया है. And Team Hope इसी फाइट के साथ Rayquaza भी जीतती हुई. And now they will jump in for those scoring. जो लीड अभी तक बचा के बना के रखी हुई थी टीम Mercury 5 ने,
वो कहीं ना कहीं अब नहीं बची है. And that is going to be Team Hope winning yet another game. The comeback is absolutely on point. Beautiful play coming in from their side. 587 to 282. Just as we expected, Venusaur MVP के साथ Comfy with 61,000 का heal and Venusaur with 87,000 damage, 79,999. His phone का price again, man. What? Ka damage is tanked up. That's absolutely insane. Slowbro with 78,000 की tanking. Did really well. वहीं हम देखे फटाफट M5 के members को. Highest damage was dealt by Vedu. Of course, that's what we would expect from that Urshifu. And कहीं ना कहीं starting से लेके almost 9 minutes and 50 seconds के mark तक they were the ones who were leading in the score. But in just those last few seconds, जो fights convert करी थी Team Hope के members, and they were able to take them down one by one, and then they were able to convert into a much bigger objective that was required. And उसके बाद बाकी तो बस औपचारिकता बची थी स्कोर इन करना. They were able to score in. Defense नहीं कर पाए Mercury 5 के members, and Team Hope wins their game number 2. They are currently leading in the score 2-1. And हम जाएंगे गेम नंबर 4 की तरफ थोड़ी ही देर में. In the meantime, ROC is also going to be going live on the Pokemon Unite India Discord server, and वो भी Monday से. So you would have to make sure to join in that server ताकि आप लोग भी updated रहो ROC के बारे में. And you would definitely not want to miss that at all, guys. So बहुत सारी चीजें होने वाली है next week PU के लिए. बहुत सारी updates, बहुत सारे news. You would definitely not want to miss any of that. And man, if you want to stay up to date, make sure to hit that like button, subscribe पे भी click कर दो, bell notification भी दबा दो, and Discord servers join कर लो जितने भी आपको description में दिख रहे हैं, क्योंकि सब पे आपको updates मिलते रहेंगे Pokemon Unite के, and that is exactly what you would not want to miss at all. Not when daily Pokemon Unite Community Cup 100 days celebration, उसकी 16 winning teams होंगी उसमें select. Basically the teams जिन्होंने सबसे ज्यादा जीते, the top 16 teams, वो लोग उसमें, वो teams उसमें select होने वाली है, invite होने वाली है, and that will be announced in this week's Nordwind Community Cup. आपको वो miss out नहीं करना. इस week Glitz and Blitz का grand finals भी होने वाला है, आपको वो भी miss out नहीं करना. And Monday से ROC is coming back, तो आपको वो चीज भी miss नहीं करनी है. And you have to make sure कि आप Discord servers को join कर लो ताकि आप up to date रहो इन सारी चीजों के बारे में. And of course, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे ताकि क्या पता अगली बार आपकी टीम ही इन मैचेस को खेल रही हो. And I'm casting one of your matches, and you would want to know any of the casting tips, तो मेरा Instagram भी description के अंदर है. Just hit me up and I will be helping you out in that. फिलहाल हम चलेंगे गेम नंबर 4 के अंदर. Urshifu and Lucario have been banned out. Finally, respect being shown by the side of Team M5. Lucario जो कि उन्हें काफी देर से दिक्कत दे रहा था, उसको बैन आउट कर दिया गया है. And now the ones, I personally feel like they're finally trying to adapt in that draft. Revenant, Scissors, Glaceon, Venusaur, Comfy, डिनाई पिक्स के साथ इस बार निकल के आ रहे हैं. वो टीटार, क्लिफेबल, टालन फ्लेम, स्लोब्रो एंड एस्पियन के कॉम्पोजिशन के साथ वी आर सीइंग टीम होप. इस बार दोनों ही टीम की तरफ से अडेप्टेबिलिटी देखने को जरूर मिल रही है हमें. कंफी नहीं है तो उसकी जगह क्लिफेबल के साथ जा रहे हैं. And again, that team fight composition जो कि mid to late game की तरफ उनकी तरफ से निकल के आएगा, उसके काउंटर के लिए we are seeing the Venusaur as well from team M5. So, man, in the late game, honestly, anything can happen between both of these teams.
The composition is so very strong. But मुझे देखना जंगल में कौन जाने वाला है. Is it going to be Venus or is it going to be Scissors? क्योंकि I personally feel like Scissors can play side lane, but Venus और को क्योंकि ज़्यादा farm चाहिए होता है and that too very quickly, तो उनका जंगल जाना is going to be a much better. Yes, in this situation, but again Glaceon को भी चाहे तो वो जंगल में भेज सकते हैं. But all three Pokemon जो कि जंगल में से चुप कर सकते हैं. But देखना फ्रंट लाइनिंग के साथ कैसे खेलेंगे वो, because it's going to be Comfy on Venusaur जो कि ट्रेवेनेंट के साथ मिलकर फ्रंट लाइनिंग करने वाले हैं. बट साइड बाय साइड Talonflame विद Clefable जाएंगे टॉप साइड में फ्रॉम टीम होप. We'll just have to wait it out and see, guys. कौन सी टीम इस गेम को जीत के निकलेगी, and we definitely have to wait and see कि इस बार किस फॉर्म के साथ जाना चाहेंगे. Because will it going to be Scyther? Will it be Scissors? Early first goal निकल के आता हुआ ट्रेवेनेंट का फिलहाल. Who's again playing in the top side from the side of team M5. तो विकास काफी ज्यादा डैमेज खाते हो. स्लो ब्रो and Glaceon, he will be actually taken down way too early though. Comfy try करेंगे स्कोर स्टॉप करने का और won't be able to do so. Slow bro फटाफट से क्लीन का स्कोर भी कर लेंगे and साथ ही साथ we're going to see a 19 score of Espeon. That is going to be some troublesome situation. 35 to 14 का टोटल स्कोर डिफरेंस. जो टीम होप को हम देखते थे अर्ली स्कोरिंग उतना आगे नहीं निकलती, वो इस बार अर्ली स्कोरिंग कर जरूर रही है. एंड टीटार अगेन we're seeing टीटार into the jungle, तो he will be able to level up way too quickly. Yes, Venusaur will also be able to do so, but he's actually a level behind, 2 levels behind to be honest. This creep के साथ he'll be able to gain back some level disadvantage, but he does not have any buffs right now. तो कि अभी spawn होंगे, but in the meantime, टीटा, Talon and everyone they're just scoring in the top side. तो उससे उनकी टीम को और भी लीड मिल रही है. 77 to 14 का टोटल स्कोर डिफरेंस. तो सेम मर्क्यूरी 5 कहीं ना कहीं अपने प्ले स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से शायद उनको इस गेम में थोड़ी और दिक्कत आए. दे माइट बी स्ट्रगलिंग इन द अर्ली गेम. एंड वी नो दैट मिड टू लेट गेम ट्रांजिशन में it's just team Hope's arena wherein they take over the entire game. So just playing with that long range jet use के fly के time पे, and that is going to be Venusaur picked off. Talonflame और Clefable के पास buffs गए. That is something so very unfortunate. Level 7 पे फिलहाल Venusaur, but level 8 hit कर चुके हैं टीटार already. One more level and then it's just going to be their arena in those fights. और Clefable अगर उनके साथ और रही तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है. But for now we're gonna see fight changing in towards that bottom side क्योंकि Venusaur के ऊपर Comfy का support. There we go. Espeon Scyther को finish off करते हुए, but again Venusaur is the one who will be dealing that insane amount of damage. दो के already आ चुके हैं. टीटा very जरूर छीन पाएंगे. एक ले लिए है, but he will have to retreat back क्योंकि Venusaur फिलहाल ज्यादा डैमेज मारते हुए. स्लो ब्रो भी यहाँ पे आ गया है. He won't be able to score any Pokeballs though. Eos Energy अभी नहीं डंक कर पाएंगे वो, but again they managed to win those team fights finally, जो कि अभी उनकी तरफ नहीं जा रही थी. They are somehow coming back in that specific department. But again we'll just have to wait and see how things are going to turn around, because I personally would think कि अगर लेट गेम की तरफ ये जाता है and टीटार जिनका अभी लेवल 9 हिट हो चुका है, he just jumps in those fights, तो उनकी टीम के पास अब उससे एडवांटेज ज्यादा रहने वाली है. Talon take Glaceon down as well and Scissors as well in the same time, side by side. They managed to secure the Reggie steal as Talon was actually able to take 3 people down. अभी top side पे is going to be Venusaur. Clefable को सीधा pick off कर लिया है and Talon I don't think so will be able to survive. Fly का जरूर use किया, will retreat back to safety. Shield और HP हल्की सी उनको जरूर मिली, but score बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे वो इस point पे. Venusaur with a 40 score finally providing his team some breathing room, and then we go the full flash fight.
फटाफट से ट्री को टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। Just entirely flipped क्योंकि टैलेंट 2 KO के साथ साइफर भी 2 KO ले चुकी है and that is an insane play from the side of Team Hope. T-Tar का level 9 वो hit करवा चुके already and now they will be taking over all those neutral objectives जो कि उनके पास अभी तक नहीं थे. That was a GGWP in this situation, but we'll have to see how things are going to turn around because at this point, I think so team M5 के लिए और ज़्यादा problems हो सकती हैं. But again, it's 318 to 73 total score difference side by side. There we go. Venusaur pick off होते हुए T-Tar से. T-Tar is the one who is just controlling the entire pace of this match. साथ ही साथ the talent flame pick जो निकल के आया है Team Hope की तरफ से. That was something that they did not expect at all. We did not expect at all. And Cypher एक second के अंदर pick off हो गया. Fly use हो गया. There we go with the unite move. Talent. He was able to create that distance, but फिलहाल Venusaur between 3 people. He's got the petal dance, he's got the Giga Drain. Trevenant with the wooden hammer as well. Try कर रहे हैं survive करने का. They've got a decent amount of tankiness, but damage बिल्कुल नहीं है और अब tanking भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि T-Tar is just insane with the ancient power. Pick off करने में कामयाब. That is a 5-for-0 trade in favor of Team Hope. Team Hope के हाथ में से comfy ले ली, but they are the ones who are just controlling the entire game and that too early game से. The ones who have the entire control, they've got the momentum, got the lead. They're the ones who are just controlling each and everything in this specific game. Espion was able to take comfy down as well. Jeez, they're in some real trouble. फिलहाल Trevenant and Venusaur दोनों के दोनों बीच में 4 लोगों के will not be able to tank anything at all. Not quite sure क्यों गए वो, but they were being picked off so very quickly. And फिलहाल Talon दोनों के बीच में will be taken down as well. Fly नहीं था escape करने के लिए. That was a good pick off coming in from Mercury 5. But now they've got a Reggie Lecky to worry about in towards that top side and Rayquaza pit में the entire control will be for now of the side of Team Hope. Venusaur trying to survive. अच्छा damage, अच्छा regen. He will. We probably taking down T-Tar, but नहीं. Clefable का support वहाँ पे आता हो. But still, Venusaur surviving between 2 people. What a play from this guy. My goodness, Clefable has been taken down. Comfy का support. Absolutely insane and T-Tar के against Venusaur win that 1v1 fight. 1 second के लिए लगा will T-Tar be able to win it with the ancient power. But Talon Flame भी यहाँ पे fall होते हुए Venusaur is the one who's finally controlling the pace, who's finally bringing some control back towards his own team. लेवल 13 भी हिट कर लिया है तो पेट्री डांस की रेंज भी बढ़ चुकी होगी अब. And Trevenant again with another back door 68 का स्कोर वहां पे करते हैं. But there we go, the full flash fight. Venusaur HP काफी ज्यादा तो सीधा burst down Clefable ने pick off secure जरूर कर लिया and Cypher will also fall in the processor क्योंकि Comfy का सपोर्ट था Venusaur के साथ. He'll be taken down as well, but उसके बावजूद Glaceon ने भी 100 का स्कोर इन कर लिया है. यहाँ पे ट्राई करेंगे सर्वाइव करने का, पर क्या वो बच पाएंगे? Rayquaza अभी बचा हुआ है अभी and they have to focus it down. If things stand as of now, it is going to be Team Hope who will be winning the game. But उसके बावजूद Comfy यहाँ पे आती है. Trevenant के ऊपर सपोर्ट आ गया उनका and T-Tar is the one who's again handling the entire pit. He's not letting them just go towards the Rayquaza pit and he's trying to zone all of them out. There we go. Unite moves finally be istemal and Talon in the meantime scores a score of 60. But look at the situation. Venusaur की HP बहुत ज़्यादा लो. He's still trying to survive. T-Tar and Clefable के against दिक्कत बहुत ज़्यादा है. His drain is being used up. There we go with the pattern dance with the true damage. But healing यहाँ पे आती हुई and he's still surviving. Talon Unite का इस्तेमाल कर चुके हैं. Fly से finally finish off किया Venusaur को.
It took 4 people to take him down. Where was the support from the rest of the team? Oh my goodness, and that is going to be a fight easily being won by the side of Team Hope for 50 to 281 के स्कोर डिफरेंस से वो फिलहाल है आगे. एक और फ्लाई का इस्तेमाल, टैलेंट विद 3 पिकऑफ्स एंड एक ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था. देयर वी गो. They were trying to score a score of 40. Venusaur been taken down in an instant. 5 लोगों के बीच में survive नहीं कर पाए. And there we go. Above 100, yet another score, and Team Hope is best of 5 series को finally जीती 3-1. 568 to 281. एक स्कोर से रह गए यार, but still that was an insane play coming in from their side. Talon with 104k damage, Del 68k damage tank, but T-Tar with 116k damage dealt, but man, that was just an insane amount of tanking coming in from their side. बहुत बढ़िया गेम प्ले दोनों ही टीम की तरफ से आता हुआ. That was so very good. It was so much enjoyable. But at the end of the day, it is going to be Team Hope who will be getting the win in that specific matchup. Starting game में जरूर ये लग रहा था कि Mercury 5 are playing this insane, but after that the fights and the comebacks from the side of Team Hope, they were just not stopping at all, and that was a very well game play. Honestly, both the teams, they did their excellent work. Both of the teams were doing exactly what they needed to do, but somehow because of those team fights, kahin na kahin, it was Team Hope who at the end of the day came out on top. Fight जीता, उन्होंने objectives को convert किया and able to win the game. News आपके लिए हमने बता दी थी, आपके games हो चुके हैं. Now we will catch you guys in the next stream. अगर आपको जाननी है वो कब होगी, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर लो, डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना. नेक्स्ट वीक से new 4 teams. We are going to have new teams for the scrims, so you have to make sure कि आप next week भी हमारे साथ join करो, because we're gonna have 4 new teams for the next week in the Underdog Invitational scrims. And of course, साथ ही साथ Nordwind का 100 day celebration कब भी है, and we also have the Glitz Grand Finals ROC भी मंडे से शुरू हो रहा है. You do not want to miss any of that. Discord server join कर लो, सारे updates आपको मिलते रहेंगे, and we will catch you guys next week. Have a good evening.